Good morning students, myself Deepika Dhanwani and I am welcoming all dear students on behalf of Ideal Institute of Commerce and Genius School of Commerce. We are talking about for the 11th standard commerce, the SP subject. In previous classes regarding 2 or 3 lecture we discussed on the topic of communication, its basic meaning, importance, methods, process. The chapter number 2 is regarding the effective letter writing and its various style. You know, letter writing is also the method of communication, which is you can say the second division of method of communication, as we discussed the oral communication, written communication. So the letter writing comes under the head of written communication. Basically, we all about know regarding the letter writing. Firstly, we talk about little bit of the history of letter writing. If you know or heard or watched in the movies, the kings and emperors used to send message in the written form on the leaves of trees, pieces of clothes or pieces of papers with the help of pigeons. Means pigeons की help से वो पहले पत्तों पर लिख करके और क्लोथ्स पे कपड़ों पर लिख करके फिर धीरे धीरे इन्वेंशंस हुआ पेपर पे, उस पे लिख करके सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस पास करते थे. यहीं से ओरिजिन हुआ लेटर राइटिंग का. On the second hand, we can say when we are under the British rule, the British also introduced the post and telegraph services in India. Okay, in which they send the postcards, inland letters, envelopes to communicate the messages. And after the independence, we also the Indian government also worked in developing the letter writing, and they also introduced the speed post services to provide the fast services or fast dispatch of letters. Then after the most modern services of letter writing called email. Got it? Each and every students know now the organization, especially the organization, institutes, businessmen are sending the letters with the help of electronic media, which is known by email. So little bit we discussed about the history of letter writing. Means the first phase when we are our kings and emperors and we are using the pigeons to provide or convey the messages. Then in British rule in India, the post and telegram services started. Then speed post services also introduced in India, and now we are communicating or we are doing the letter writing through the emails. The characteristics and the basic features of letter writing, it is reasonable and simple method of communication. जो सबसे simple method है communication का और बहुत पुराना भी है. Second, it has no boundaries of place and time. Place की time की कोई boundaries नहीं है letter writing में. The third point, it is recognized as an evidence of information, जो हमें oral communication में नहीं मिलता है, but in written communication and in the letter writing we have the evidence. Next, easily sent and received. Easily आप भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, either with the help of post and telegrams, either with the help of speed post, or if we are talking in the modern era, we can easily send through the emails. Email के through हम easily letter writing कर सकते हैं. The establish the link between writer and receiver. ये writer और receiver के बीच एक link establish करता है. Writing a letter establish the image of the firm. If we are writing the letter on the behalf of any organization or any institute, your letter writing also shows the image of the organization also. Means your letter is representing such business, such institute. Next, it work as a silent representative of the concerned firm. वो एक firm क्यों represent करता है उसकी image को. So here we discussed about the characteristics and the features of letter writing. The next important head, types of letter writing. It is just only the sum of major 2 types of letter writing, and in further classes we will more discuss on such topic.
Majorly two types of letter writing, formal and informal. Now see, what is the meaning of formal writing? The letter written for the business, government matters, administration purpose, it is considered in the formal writing. Means जब भी गवर्नमेंट मैटर्स पे बात होती है, कोई बिजनेस किसी भी लेटर को लिखता है, कोई इंस्टीट्यूशन लिखता है, और यू कैन से एडवर्टाइजमेंट पर्पस से, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से, दे ऑल कम इनटू द फॉर्मल लेटर. फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरीज एक्सेट्रा. जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, व्हेन वी राइट द फॉर्मल लेटर, देयर इज सम स्पेसिफिक फॉर्मेट. एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेटर लिखा जाता है. व्हाट अबाउट द इनफॉर्मल लेटर? The letter which is written for the social matter and to maintaining the relations. जैसे हम social relations को maintain करने के लिए जो letters लिखते हैं, जैसे for example किसी को congratulations send करने के लिए, किसी को invitations देने के लिए, किसी को condolences देने के लिए, दुख की अभिव्यक्ति करने के लिए, ऐसे letters का कोई भी format नहीं होता है. हर individual, हर businessman, हर organization अपने बेस पे उस फॉर्मेट को जनरेट करके लेटर सेंड कर सकती है. सो देयर आर द मेजर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. देयर इज टू क्वेश्चंस आर मेंशन्ड हियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस? व्हेन वी आर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन मींस बिटवीन वन इंडिविजुअल एंड अदर, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, बिटवीन टू इंस्टीट्यूशन, जब दो इंस्टीट्यूशंस के बीच, और बिटवीन द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन थ्रू द लेटर राइटिंग, एक इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशन के बीच जब लेटर राइट करके एक्सचेंज किया जाता है मैसेज को, तो वो करस्पॉन्डेंस कहलाता है. और जब हम इस प्रोसेस को बिजनेस में यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द बिजनेस करस्पॉन्डेंस. मींस कोई इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को, दो इंस्टीट्यूशंस आपस में एक्सचेंज करती हैं, आइदर वन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन अपने मैसेज को रिटन फॉर्म में, लेटर फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं, तो वो बिजनेस करस्पॉन्डेंस कहलाता है. बेसिकली जितने भी बिजनेस मैसेजेस लेटर के थ्रू पास आउट होते हैं, वो फॉर्मल लेटर में कंसीडर होते हैं. ओके, थैंक यू.